Very good morning, friends, and welcome to my channel. And today we are going to talk about what is your type. See, many a times we feel that the job that is given to us and the way we are made to do the job is different. And why this happens because there are various types in which you dwell. So today we'll discuss about what is your type. So in which way you love to do a job or you do to work, and how this change of the type of work that is given to you and the way of working that you are into, and how this leads to stress. So we'll discuss about it in today's lecture. Before that, if you have joined me today, let me introduce myself. I'm Ashish Nagar, and I'm a YouTuber as well as a wellness and life coach with complete focus on stress, anxiety, and depression. And completely, I am focused on health related to stress, anxiety, and depression by the virtue of the experience I have and my own experiences as well as my professional experiences as a physiotherapist. I have reached a conclusion that a lot of times the physical pain is directly correlational to the amount of stress that we have. And you can go through my previous videos right from 3rd January till today, the morning message, to know the details about how it affects us, right? So stay tuned with me, stay tuned to my channel, and daily I share one tip. This month we are celebrating it as stress awareness month, and so I want you to make you aware about what are the things that are exposing you to stress. So stay tuned with me and let us talk about what is your type, right? To save your skin from a bit more subtle stress, anxiety, leading you towards depression. Right? Stay tuned and continue watching. Welcome, friends, and today's talk goes on what is your type and how you correlate with the working and related with your type of personality. So, there are four types of people normally in the world. The first are the thinkers. Now, who are the thinkers? They dwell upon a problem a lot. You just dwell upon a problem, you just stay concentrated on a problem, you just feel that problem, if there is some query in front of you, you dwell upon thinking a lot on it. You think about all the pros and cons related to that. You think about the positives, negatives. You think about the do's and don'ts. You think about what will be giving you maximum result and what will delay the result, etc., etc. In short, you have lots of things to think upon, and you think on facts, you think on the basis of numbers, you think on the basis of logic, you think on the basis of say we can call it as the as I said, the negatives and positives, right? So the one first prototype is the thinkers, right? The second prototype in all of us, this is a generalized talk. See, you have to identify in which group you come. This is a generalized talk. So the first thing in this is the thinker. The second are the doers. The doers believe in action, they believe in taking action, right? They want that, okay, it is a quick action that should be taken, because if you start working, only then you will come to know what are the results we are getting. So this is what the action people do, right? They normally tend to work, so they tend to do the thing to get the result, right? They often feel that doing is the solution for any problem, not sitting and thinking. So these people are, they are sort of
They don't believe in meetings. They don't believe in sitting and thinking. They believe that if a thought is coming to the brain, it should be put into action, because as you start acting, it will make your mind more clear, and it will give you the positives and the negatives of what you are going to do. So this is the second prototype. These are the doers. The third are the feelers. They are sensitive. They are like me, so they are more sensitive. They believe that how I will feel if I do this job. So they feel the thing. They feel motivated. They are motivated with the feeling behind the work that is given to them. They feel motivated behind the sense. The action should make sense to them. They cannot end up into doing something that is not making that is not motivating them from inside, or that is not breaking them from inside. These are very strong workers. They are very sensitive. They feel bad very fast. They can feel bad of something if you restrict them in their job. They feel bad if you are blocking their thought process, because it is more internal oriented. It is more feeling oriented, and feelings are the things that we definitely value more than anything else. So until and unless they feel the need to do this, like the feelers will be feeling that I am feeling that I should listen this video from Ashish, because he says something that connects to me. So these are the feelers. And the fourth type are the relators. Now relators are absolutely outgoing extrovert people. They would love to connect in the community. They are very fast connecting. They can talk to anybody anywhere, and they love people. So they need to be surrounded with people right from the morning. From the day, as the day starts up, they will go and join the jogging groups. They'll go and join the walking groups. They'll go and join the yoga groups in the gardens. They will join in all the community programs, and they will love to stay. These people, they'll be having guests. They'll be having lots and lots of connections in the community. So they are empathetic, and they have a lot of friends also, and they love to stay in between the friends. Now, how these four types we discussed are the thinkers, the doers, the feelers, and the relators. These are the four types that we discussed. Now, how this imposes you to stress in a team. Whenever you have a team, you might be having some feelers, you might be having some doers, you might be having some thinkers, and you might be having some relators, right? So that is what is your corporate team. What is a corporate team? The corporate team has a back office, and they have a front office. A front office normally has people who are more of relators, right? So we tell them PROs, or we tell them relationship officers, right? So this is the extrovert part of the company. Then there will be people who might be sitting and brainstorming. They'll be thinking on this thing. Now then there are doers, right? Doers often end up into that why it is not done, or why it is done, or why you have not taken action on this. So that is the job of doers, right? And then there will be the fourth type, that is the feelers will be there. Now in a team, when these four people are together, right, the thinker says, let us reflect on all the pros and cons of this particular scheme. When we will put it, what will happen, what will be the basic fundamental we will need, what will be the investment we will need, what will be the how many people will be taking this scheme, and how we are going to make money from this. So this all work means the CA part and the accounting department.
So just correlate with the corporate world. CA or the accounting department are the thinkers, right? They'll think of the profit, they'll think of what we are going to get out of it, right? Then the second is the doers. Doers are the salespeople, right? So they just take up the thing and they'll start putting it or implementing it in the field. They'll just say, okay, the plan is ready, we are going to implement it. That's it. Let us implement it, let us see, let us put it on a trial basis. Let us see what is the response, and then we will decide whether we have to continue or to change the plan. These are the doers. Then there are the feelers. The feelers will say, but why will the person take this? What is the factor that will make the people take this particular plan or this particular scheme that you are going to do? Why will be a person interested into this particular plan? So these are the marketing people. Marketing people, they stimulate the why within you. When you see an ad, a small child sitting and praying to God, that dairy milk ad typically that plays almost thousands of times on thousands of channels in our television, and even in mobiles we get these. So have you seen that those ads that stimulate you emotionally, they appeal you most, and they have an impact on your brain when compared to those ads who give you palatable feelings, right? So that feelings will be there, so some ads are visually attracting, some are emotionally stimulating you. So these are the job of the feelers that they do this, right? So they are the marketing personnel. And last are the last are the thinkers are over. Relators are the people who are actually going to deal with the client that is coming to you. So that is the customer care in your company. Now for you to, because you will be working with any one of these, so today I want you to just sit and try to analyze that in your team with which you are working, if you just understand these differences, that okay, a certain guy in your team and a certain guy in your team, if there are two guys who are thinkers, they'll be able to match the work very good. See, just relate it with how we are relating. I think I'll switch a little bit to हिंदी also, क्योंकि मेरे हिंदी व्यूअर्स भी हैं, तो मैं थोड़ा सा भी कॉर्पोरेट में से निकल के थोड़ा हिंदी में जरा ब्रीफ कर देता हूँ. तो हमारे पास 4 तरह के लोग होते हैं. जो एक सोचने वाले लोग होते हैं, जो सोच से काम करते हैं, वो नंबर्स के साथ काम करते हैं, वो यह सोचते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, कितने लोग इसको खरीदेंगे, कितने नहीं खरीदेंगे, कितना हमारा प्रॉफिट होगा, कितना इन्वेस्टमेंट होगा, क्या इसके क्या बेनिफिट्स होंगे, इसके क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान हो सकते हैं, इस स्कीम को लेने वाले को क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, इससे कंपनी को क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं. ये आते हैं हमारे थिंकर्स में, सोचने वाले बंदों में. दूसरे होते हैं जो काम करना पसंद करते हैं, जो एक्शन गाइड्स होते हैं. ठीक है, उनको आप ये दे दो कि भाई ये करना है और वो पट 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 करने में मानते हैं. वो ये मानते ही नहीं कि बैठ के, वो बोलेंगे सोचना टाइम की बर्बादी है. जितना ज़्यादा आप सोचोगे, ओवर थिंकिंग इज वर्स्ट, जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में देखिए, हर चीज़ एक प्रपोर्शन में अच्छी लगती है और आपको ज़िंदगी जीने के लिए इन चारों का कॉम्बिनेशन चाहिए होता है. आप किसी भी एक को लेकर के जीवन नहीं निकाल सकते हैं. एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम हम इन चारों ट्रायड्स को कहीं ना कहीं यूज करते हैं, कम या ज़्यादा प्रमाण में. ये बैलेंस हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली करता रहता है. तो दूसरे टाइप के जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, उसमें हैं जो लोग करते हैं काम. ठीक है, वो सोचने में या बात करने में, मीटिंग करने में नहीं मानते. वो कहते हैं फालतू बात है, खाली बैठ के 2 घंटे टाइम वेस्ट करना है. उनको प्लानिंग से कोई लेना देना नहीं होता. उनको ये होता है कि आपको दिमाग में आया और आप उसको एग्जीक्यूट कर दो और फिर देखी जाएगी उसके प्रॉस एंड कॉन्स. अगर नेगेटिव रिस्पॉन्स है तो इम्प्रोवाइजेशन करेंगे, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए तो बल्ले बल्ले. ये होते हैं करने वाले. तीसरे लोग होते हैं जो भावुक होते हैं, जो ये समझना चाहते हैं कि कोई बंदा यदि इस पर्टिकुलर स्कीम में या इस पर्टिकुलर मूवमेंट में इंटरेस्टेड होगा तो वो क्यों इंटरेस्टेड होगा. ये तीसरे टाइप के लोग होते हैं. और जो लास्ट टाइप के लोग इसमें होते हैं, वो होते हैं आपके रिलेटर्स, जो किसी से भी बहुत अच्छे से रिलेशन बना सकते हैं, बहुत जल्दी से कनेक्ट हो जाते हैं किसी से भी. तो हमारी जो भी टीम है, आपको ये ज़रूर उसमें पता करना है कि आप जिनके साथ काम कर रहे हो वो किस तरह, क्योंकि थिंकर के साथ थिंकर सेट होगा, उसे ज़्यादा मज़ा आएगा जो सोचने वाले लोग साथ में बैठे होंगे तो. और अगर दो
काम करने वाले लोग मिल जाए तो माशाअल्लाह है, फिर तो कोई उनको रोक ही नहीं सकता, वो तो फिर काम में लग जाएंगे तुरंत ही कि आया और काम कर दिया। तीसरे टाइप होते हैं फीलिंग वाले, तो फीलिंग वाले बैठ करके और वो बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाएंगे, दिल से कनेक्ट हो जाएंगे ना, हम कई बार बोलते हैं कि दिल से कनेक्ट हो गए, तो फीलिंग वालों बंदे से आप दिल से कनेक्ट हो सकते हो। और फिर चौथे टाइप के जो लोग होते हैं वो आप ऐसे बोलो कि जिनको हम कहते हैं कि वो बिल्कुल मार्केटिंग वाले बंदे हैं, वो सारा दिन बाजार में रह सकते हैं, उनको आदमी नहीं दिखे तो अगर वो सुबह उठ करके 4-5-10 आदमियों को नहीं मिले तो उनको ऐसा लगता है कि वो पागल हो जाएंगे। अब इसका इम्पैक्ट कैसे होता है? एक कंपनी में आपको आप एक पर्सनली मैं या आप एक फीलर हैं, आप चीज़ों को फील करते हैं। अब किसी कंपनी में जहाँ आप काम कर रहे थे वहाँ आप फीलिंग के साथ काम कर रहे थे, ठीक है, तो उस कंपनी में जब आपको जितना आपको चाहिए वो रिम्यूनरेशन या वो अप्रेजल नहीं मिला तो आपने दुखी होकर के कंपनी स्विच कर ली। दूसरी कंपनी में आपकी सैलरी अच्छी है, आपकी पोस्ट अच्छी है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो अच्छी है, उससे आपका बायोडेटा स्ट्रांग हो रहा है, लेकिन वो जॉब आप फीलिंग वाले बंदे हो और वो जॉब ज़्यादा पीआरशिप से रिलेटेड है, रिलेटर्स से रिलेटेड जॉब है, तो क्या होगा? पैसे ज़्यादा है, जगह अच्छी है, आपको डेजिग्नेशन भी हायर मिला है, आपको सब कुछ आपके हिसाब से है, पर आप खुश नहीं हो क्योंकि आप यू आर अ फीलर एंड यू हैव टू वर्क एज अ रिलेटर। आप समझ रहे हैं कहाँ स्ट्रेस बैठा हुआ है? मैं वो आपको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी कंपनी में आप बैठ करके प्लानिंग का काम कर रहे थे, आपको बिठा करके बोला गया कि ये पूरा प्रोजेक्ट अपने को तैयार करना है, आप एक थिंकर हो, थिंकर बैठेगा पूरा मेटिकुलसली प्रोजेक्ट तैयार करेगा, बहुत अच्छी बात है, यस, और कंपनी वाले बहुत खुश है, मैनेजमेंट बहुत खुश है और वो बोल रही है वेरी गुड, नाउ यू हैव डन दिस प्रोजेक्ट, चलो अब इसको इम्प्लीमेंटेशन में डालो, फटाफट काम करना शुरू करो। आप क्या हो? थिंकर। और थिंकर को क्या बोल दिया कि तुम इस प्रोजेक्ट में फटाफट काम करना शुरू करो, तो थिंकर क्या हो जाएगा? पजल हो जाएगा। पहली खुशी आपके पास है कि वाह मेरा प्रोजेक्ट बहुत पसंद आया, मेरा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा था, फुल प्रूफ प्रोजेक्ट था, सबको पसंद आया, वेरी गुड। बट सडनली क्या हुआ? सडनली रोल जो दिया गया आपको वो डूअर का रोल दे दिया गया और फिर उसके साथ ये भी कह दिया गया कि अब तुमको ये प्लान लेकर के लोगों को अप्रोच करना है और तुमको लोगों से ये प्लान को बेचना है। सो यू इनडायरेक्टली एंड अप फ्रॉम अ थिंकर टू अ डूअर एंड अ रिलेटर। समझ रहे हैं आप? ये जो छोटे छोटे कन्वर्जन है हमारी जॉब में, तो दो इसके पार्ट है। पहला पार्ट है कि आप ये समझिए कि आप किस रेंज में आते हैं, आप थिंकर में आते हैं, डूअर में आते हैं, फीलर में आते हैं या आप रिलेटर में आते हैं, आपकी रेंज क्या है और फिर आपकी जॉब आपको क्या ऑफर कर रही है। आप फीलर है, आपकी जॉब आपको थिंकर बना रही है, आप थिंकर है, आपकी जॉब आपको रिलेटर बना रही है, क्या व्हाट इज यू नो दिस इनकॉन्ग्रुएंस। ये जब जॉब में नहीं होता है तो हम फिर भी स्ट्रेस में जाते हैं और इसीलिए कई सारे लोग कई जगह पे बैठे हुए हैं, वो लोग बढ़िया से बढ़िया पोजीशन पे है, बढ़िया से बढ़िया पैसे कमा रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया काम भी देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी स्ट्रेस में है। उनका ये दिमाग ऐसे हर समय उगलता रहता है क्योंकि यू आर नॉट रिलेटिंग विथ योर बेसिक प्रोटोटाइप ऑफ वर्किंग। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, राइट? और ये भी समझिए कि आपके साथ में जो काम कर रहे हैं उनकी क्या ब्रांच है। अब आपको इन हर एक को डिफाइन करना है अपने लिए और आपको ये डिसीजन लेना है बेस्ट कि जो मैं अभी जिसमें काम कर रहा हूँ, सपोजिंग अगर आप एक फीलर और आप थिंकर में काम कर रहे हैं या आप रिलेटर में काम कर रहे हैं, तो आपको उन स्किल सेट की जरूरत है क्योंकि आपकी सैलरी अच्छी है, आपकी डेजिग्नेशन अच्छी है, आपका रेम्यूनरेशन अच्छा है, आपका कंपनी में वैल्यू अच्छी है, तो आप जॉब छोड़ने की तो नहीं सोचेंगे, तो आप क्या सोचेंगे? अपनी कमी को पूरा करने का। अब आपको ये टॉक के बाद पता चल गया कि मैं फीलर हूँ और मुझे काम दिया हुआ है रिलेटर का, तो मुझे रिलेटर में अपने आप को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, राइट? और उस स्किल सेट को सीखिए। हजारों लोग मैंने देखे हैं जो बैठे बैठे दे आर जस्ट परचेसिंग कोर्सेज, दे आर डूइंग कोर्सेज, दे आर अटेंडिंग सेमिनार्स और सब कुछ अटेंड करने के बाद वो आ करके ऐसे बुद्ध बन के बैठे रहते हैं। कोई चीज आपको अफेक्ट नहीं करती, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे स्पिरिचुअल सेमिनार सुन लो, आप चाहे लॉजिकल सेमिनार सुन लो, आप चाहे कॉर्पोरेट सेमिनार अटेंड कर लो, कोई 1% उसमें फर्क नहीं पड़ता।
क्यों फर्क नहीं पड़ रहा है? क्योंकि आपका बेसिक प्रोटोटाइप के साथ आप उसका अलाइनमेंट नहीं कर रहे हैं। अब आपको एक अच्छी बात बताऊं, एनएलपी में हम लोग ऐसी टेक्निक्स यूज करते हैं जिसमें हम ये आपके अंदर प्लांट कर सकते हैं। हाँ, आप ऐसा सोच लो कि पेन ड्राइव में लेकर के मैं यहाँ लगाऊंगा और आपका जो रोल आपको प्ले करना है मैं उसको डाउनलोड कर दूंगा आपके अंदर। That is possible. That is very much possible. So if you want this miraculous change, stay tuned with me. Please stay tuned with me. See, मैं यहाँ सिर्फ इसलिए बैठा हूँ कि मैं 2020 को आपके लिए चेंज कर दूँ, आप 2020 में चेंज हो जाए, आप 2020 में ब्लास्टिंग हो जाए। इसीलिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मैं आपसे इतनी सारी बातें कर रहा हूँ। तो मेरे साथ स्टे ट्यून्ड विथ मी, राइट? यदि इस वीडियो में आपको समझ में आए, यदि आपको डाउट है, देखिए क्वेश्चंस तभी आएंगे जब आपको समझ में आएगा या नहीं समझ में आएगा, नहीं तो क्वेश्चंस नहीं आए। क्वेश्चंस आते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए, पूछिए। आपके क्वेश्चन मेरी इनसाइट है, मेरे अगले वीडियो का प्रेरणा है, मेरे आगे बढ़ने की प्रेरणा है। आप नहीं पूछेंगे, मैं देने ही वाला हूँ आपको। यदि आपको कहीं भी डाउट आता है प्लीज मुझे कमेंट कीजिए नीचे, ठीक है? आपको पसंद आता है प्लीज कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए और अपने दोस्तों के साथ ट्यून कीजिए। आपका आउटपुट कमाल का हो जाएगा। आपको लोग बोलेंगे मिरेकल हो गया है, लोग बोलेंगे यार तो आजकल क्या सुनता है या क्या खाता है या क्या पीता है कि तो ऐसे चेंज हो गया है। वो यूरेका जब आपको मिलेगा ना ये कमेंट्स, तो आपकी ये चारों जो पार्ट है ना, ये चारों सारी बातें खिल जाएंगी आपकी। यू विल बी मोर सक्सेसफुल देन यू आर, यू विल बी मोर इफेक्टिव देन व्हाट यू आर राइट नाउ। सो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड कीप लिसनिंग, कीप वर्किंग विद मी। मैं आपको बहुत कुछ देने वाला हूँ, बहुत कुछ बताने वाला हूँ। शायद आपको पता भी होगा तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसमें कुछ जोड़ने की कोशिश करूँ। तो आज की टॉक की समरी, आर यू अ थिंकर, सोचने वाले, डूअर, काम करने वाले, फीलर, फील करने वाले, और आर यू अ रिलेटर, जो लोगों से कनेक्ट करते हैं। अपने इस क्राइटेरिया के हिसाब से अपनी जॉब को सिलेक्ट कीजिए, नंबर 1। और नंबर 2, इस क्राइटेरिया के हिसाब से अगर आपकी जॉब नहीं है तो आपकी जॉब किस क्राइटेरिया को डिमांड कर रही है उसको डेवलप कीजिए। और कोई भी आपको सक्सेसफुल होने से आपको अपनी चाहत वाली जिंदगी बिना प्रेशर कुकर में बैठे जीने से नहीं रोक सकता है। तो मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद इस वीडियो को सुनने के लिए, समझने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए। मैं आशीष नगर आज के लिए आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे एक और टॉप के साथ और इससे एक स्टेप और आगे जाएंगे कल के मॉर्निंग मंत्रा में। तब तक मेरे साथ बने रहिए। सी यू, स्टे वाओ, स्टे ऑसम, डू द बेस्ट, मेक योर लाइफ व्हाट यू वांटेड, नॉट व्हाट पीपल हैव और सर्कमस्टेंसेस हैव मेड इट, राइट? सो टेक ए कंट्रोल, stay wow, bye bye.